and and parallel to a given line segment. Equation of a line passing through a given point and parallel to a given line segment whose DRs are given. Whose DRs are given. This is three-dimensional coordinate system. And suppose there's a line which passes through a given point. This given point is A, and it has coordinates x1, y1, z1. And its position vector says R1, which is x1i, y1j, z1k. So our line passes through this point A, which has coordinates x1, y1, z1. And the line also parallel to a vector or line segment, which is m is equal to ai plus bj plus ck. So this line passes through point A and it's parallel to the vector which is m, and this vector m has DRs A, B, and C. So it'll be a unique line. It'll be a unique line which passes through the point A and passes through and parallel to this. Only one line would be there which is parallel to this and passing through it. And the line is this Z1. X1, Y1, Z1 are the coordinates of the point. So we take some variable point of the line. Any point of the line says P. Coordinates are X, Y, Z. And its position vector is R. R is Xi, Yj plus Zk. Now, M is parallel to this line. जिस लाइन के हम इक्वेशन निकाल रहे हैं उसके पैरेलल है M, और वो हमेशा इस पॉइंट A से पास कर रही है लाइन. So there'll be one unique line which passes through a point and parallel to a given line segment. There'll be one unique line which passes through point x1, y1, z1 and parallel to M. मीट थोड़ी कर रहा है, ये इससे मीट थोड़ी कर रहा है, वो तो पॉइंट से मीट कर रहा ना हमने. A is the point on the line. This is a required line. This is a required line जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. इस लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है. So you can find vector AP. This vector AP is parallel to M, है ना? This vector AP is parallel to M. Because vector AP lies on the line is parallel to M, so therefore AP would be parallel to M. AP M के parallel हो जाएगा. So whenever two vectors are parallel, तो क्या relation होता है? Whenever two vectors are parallel, one vector would be scalar multiple of the other. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर है 2i प्लस 3j और दूसरा वेक्टर है 4i प्लस 6j, so this is they are parallel to each other. So now, whenever vectors are parallel, one vector would be scalar multiple of the other. पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स में क्या रिलेशन होगा?
one vector would be scalar multiple of the other. That is, I can always write AP vector is equal to lambda times m, where lambda could be any real number. जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा. दैट इज एपी क्या है? एपी है आर माइनस आर वन वेक्टर इक्वल टू एम लैम्डा, और आर इज इक्वल टू आर वन प्लस एम लैम्डा. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ये हमने वेक्टर इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला डेराइव कर दिया. इसमें आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन. व्हाट इज एम? एम इज पैरेलल लाइन के डी आर्स. लैम्डा इज एनी रियल नंबर. So this is vector equation of a line. In this, we have any point, position vector of any point on the line. R1 is position vector of the given point. And what is M? M is drs of parallel line or the line itself. ठीक है? जो parallel line के dr हैं वही line के dr हो जाएंगे. So this is vector equation of a line. शनाया तुम क्यों नहीं आई आज? मैथ्स का पेपर है पर कब? परसों. अच्छा, अब इसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आर आर वन को रिप्लेस करो. आर इज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के माइनस आर वन इज एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के इक्वल टू एम इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. और फिर आई जे के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो. दिस वुड बी एक्स माइनस एक्स वन आई y minus y1 j z minus z1 k, and the right side is a I lambda b lambda j c lambda k. I j k are linearly independent vectors, so you can always compare the coefficients. It's like this. Or you can find lambda. This is the Cartesian equation of line. Cartesian equation of line is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. इसमें जो डिनोमिनेटर में आएगा वो होंगे drs, बट यू हैव टू इंश्योर दैट द न्यूमरेटर में x y z के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव वन होने चाहिए. एंड दिस x1 y1 z1 वुड बी द गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट. लैम्डा इज एनी रियल नंबर. लैम्डा की हर वैल्यू के लिए दिल बी one point on the line. Lambda is a real number, infinite values. Each value will give you 1 point on the line. So if you have vector equation, you can convert into Cartesian. If you have Cartesian equation, you can convert into vector equation. Cartesian equation हमेशा x, y और z के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव वन लिख के करना है. ठीक है. और
यहाँ से we can also find x, y and z. What will be x, y, z? X, y, z will be variable point on the line. This is variable point on the line. Any point on the line. Each value of lambda gives you one fixed point. So these are the coordinates of any point on the line. So this is vector and Cartesian equation of a line passing through a given point. Write a question. Find Cartesian and vector equation of a line. Cartesian and vector equation of a line which passes through a point 1 3 minus 2, 1 3 minus 2, and is parallel to a vector whose DRs are 2 1 4. Find Cartesian and vector equation line which passes through 1 3 minus 2 and which has DRs 2 1 4. कर लो. Question. So x1 y1 z1 गिवन है, ABC गिवन है. DRs हमेशा ABC होंगे और x1 y1 z1 पॉइंट्स दे रखे हैं. तो कार्टेशियन निकाल लेते हैं पहले. What is the Cartesian equation? X minus x1. X1 is 1, y1 minus 3, and z minus 2. Divide by a, which is 2, 1, 4 equal to lambda. ठीक है? This is the Cartesian equation. And vector equation क्या होगा? R is equal to R1. R1 हो जाएगा 1i 3j minus 2k. And lambda times m. M is 2i plus j plus 4k. So that is the vector equation. They are convertible. वेक्टर से कार्टेशियन आ जाएगा, कार्टेशियन से वेक्टर आएगा. जो term is without constant, that is the point always. And the term which is being multiplied by constant real number, it is the DRs. So the term which is being multiplied by lambda, that will give the DRs, and the other one would be always the given point on the line. ठीक है? Suppose the line is 2x minus 1 by 4, 3 minus 4 minus 3y by 6 and z minus 1 by 5 equal to lambda. Tell me DRs of this line and the point which lies on this line. बताओ. इस लाइन के DRs बताओ क्या है. कार्टेशियन इक्वेशन दिए बने हैं, इसके DRs बताने हैं. DRs के लिए हमेशा coefficient of x, y and z should be positive 1, right? Positive 1. So first ensure that the coefficient of x, y, z are positive 1. तो इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो. x minus 1 by 2 by 2 divided by minus 3.
y minus 4 by 3 by minus 2. And this is already 1. So now this is standard form. In the standard form, coefficient of x, y and z should be positive 1. तो अब जो डिनोमिनेटर में वो dr हो जाएंगे. तो dr's क्या हो गए? 2 minus 2, 5. And what is the given point of the line? This is the given point. 1 by 2, 4 by 3, 1. So now you can write the vector equation also. What will be vector equation? Vector equation would be r is equal to r1. R1 is this. And then lambda times the dr's. Dr's 2i, 2j plus 5k. So this is the vector equation. So this is the standard Cartesian equation. So you can convert Cartesian to vector, vector to Cartesian, but for finding dr's, coefficient of x, y, z should be positive 1. Suppose this is a line which is r is equal to 2 minus 3ti plus 2t minus 1j plus t plus 2k. This is t plus 2k, where t is a real number. Convert this line into standard vector form and Cartesian form. इसको standard Cartesian form और vector form में लिखो. मतलब कांस्टेंट टर्म को अलग से कर लो. मेरा हो गया. नहीं सर, अभी कर रही हूँ. ओपन करके t वाली टर्म अलग कर, सेपरेट, एंड द अदर टर्म सेपरेट. सो विल बी 2i minus j plus 2k. So this is a given point, and t common will be minus 3i minus j plus k, right? So we have separated it. So this is basically the standard 2j, हाँ, minus 3i plus 2j, right? So we plus 2j, हाँ. And what about Cartesian form? This is a point. Now the term which is without constant is point, and the term which is with constant is the dr's. So what will be Cartesian equation? X minus x1 by minus 3. Y minus y1 by b. Z minus z1 by c equal to, say, t. T, lambda, mu, whatever. See, this is such a chapter in which you'll be scoring good marks. There'll be 3 questions in entrance. And for sure, these 3 questions you can answer correctly. Next part of the question. Find foot of the perpendicular from the point 102 dropped on this line, and also find the distance. Find foot of the perpendicular B dropped on this line from the point 102. Kar lo. Foot of the perpendicular.
हम्म। क्या? बोलो। क्या कर रही हो? हम्म। हाँ, ये वन होना चाहिए, ये वन होना चाहिए, ये तो वन ऑलरेडी है। इसको टू से करो, इसको -3 से करो, इसको कुछ नहीं करो। इसी को करना है सिर्फ, इसको ऊपर नीचे। कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ। So we're dropping a perpendicular from 102 on the line, and then we find the length of the perpendicular and the, क्या करोगे इस बार? You can find any point. You already have the dr of the line, है ना? इस लाइन के dr ऑलरेडी हमारे पास है, कितने हैं? -3, 2 and 1. You can find any point on the line. Any point on the line कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x-2 इज इक्वल टू -3t, y+1 is equal to 2t, and z-2 equal to t. So what will be x? 2 minus 3t, y would be -1 plus 2t, and z would be 2 plus t. हाँ, वही वाला सेम लिया है मैंने। ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ b in terms of t. Now you find dr's of ab. You have coordinate of b, you have coordinates of a. दोनों को subtract and then find dr's of ab. You have coordinates of b in terms of t. By subtracting a and b, you can find dr's of ab. What are the dr's? 2 minus 3t minus 1. Only 1 minus 3t. -1 plus 2t minus 0 will remain the same. And 2 plus t minus 2. That is t only. So now you have dr's of AB. You already have dr's of the line. They're perpendicular. तो क्या करना चाहिए? Dot Yes. product. Product 0 ना? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. उसको सॉल्व करो, t बताओ क्या आ रहा है? Sum of the product of dr's equal to 0. As the two are perpendicular, the product, the sum of the product will be 0. -3 into 1 minus 3t, 2 into -1 plus 2t, and 1 into t equals to 0. Solve it for t. अभी 5 का by क्या आ रहा है? 5/14. 5/14। मेरा तुम्हारा क्या है? 5/14. ओके। रायन। The 5/14. अब इस t को यू सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b.
बी में सब्स्टिट्यूट करो, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है ना, कितना बताया मैं, 5/14। So once you substitute it, we get the coordinates of foot of perpendicular. कितना आ रहा है ये, 2 minus 5/14, 28 minus 15, 13/14, 13/14. What is y coordinate? -2/7, and z 33/14. And once we know the coordinates, we can apply the distance formula and we can get the distance also. So this is how you find the foot of the perpendicular. ठीक है, जायना कर लिया? Yes, sir. All right, Ren, understood? आई थिंक कुछ गलती हुई। Hmm? सो एक्स हमने इधर 2 - 3t है लिया है, उधर नहीं सॉरी सर। क्या x's? नहीं सर, मैं कुछ गलत पढ़ लिया। Hmm. Now sometimes you've been given 2 points, and the question is find the equation of line. Equation of line passing through 2 points. So there are two given points, A and B. So the coordinates are x1, y1, z1, and x2, y2, z2. So if you've been given coordinates like this, then we can find the drs to the line. Drs will be x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. And the equation of line will be x minus x1 by dr, y minus y1 by dr, and z minus z1 by dr equal to lambda. So drs are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So this way you can find equation of line if you've been given 2 points which are on the line. Hmm? बोलो। dr को माइनस किया ना, ये तो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, दिखाओ। These are the coordinates of the b, ये। So if you subtract this from this, you get drs. जैसे अभी यहाँ पे किया ना, दोनों पॉइंट को माइनस किया तो ये तो लाइन के dr है ही सीधे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था ये। एम ही तो है ये, -3, 2 and 1, ये एम ही तो है ये रहा। It doesn't make a difference because drs are in proportion, so it won't hardly make a difference. ठीक है। And moreover, this x1, y1, z1 को we can also write x2, y2, z2, सेम आंसर आएगा। ओनली थिंग इज लैम्डा की जगह म्यू कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन कर लो, फाइंड वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन of a line passing through 2 points A and B. Find equation of Cartesian vector equation of line passing through 2 points A and B. A is 1, 2, 5, B is -3, 4, 4.
You can find DRs. ए भी कर लो, 1 - 3 भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे. 2 - 4 will be -2 and 5 - 4 1. So Cartesian equation x minus x1, y minus y1, z minus z1 divided by drs. 4 - 2 1 equal to lambda. Vector equation would be r is equal to r1. R1 is the point. I'll take this as point. I. ये वाला मैंने उल्टा लिया है ना. तुम्हारा आ रहा होगा -4 2 - 1. तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लैम्डा उधर माइनस हो जाएगा. दिस इज लैम्डा टाइम्स डी आर्स 4i -2j plus k. And if you want, you can take the point this also. Whichever point you want to take, answer would be correct. जानवी कर लिया. जानवी. अनुज. सर मैंने अभी ज्वाइन की थी क्लास जस्ट. अच्छा अच्छा. क्या हो गया? सर कहीं गया हुआ था. हम्म. और मेरा कोई डिनर विनर तो नहीं है आज? No, sir. क्या बात कर रही हो? तुम्हारी हर क्लास मिस होती है. नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो. एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस. Suppose we have two lines like this. One line has equation r is equal to r1 plus m lambda. Another line is r is equal to r2 plus m1 ले लो इसको, m1 lambda. This is m2 mu. And the angle between them says theta. So there are two lines. One line is r equal to r1 plus m1 lambda. Another line is this. And we need to find the angle between them. So first line is parallel to m1. Second line is parallel to m2. That means angle between m1 and m2 will be the same as angle between the two lines. So we can find dot product of m1 m2. So that gives you cos theta. Or in terms of DRs, A1 A2, B1 B2, C1 C2 divided by root of A1 square, B1 square, C1 square, A2 square, B2 square, C2 square. Question we कर लेते हैं. There are two lines. One line is this, and the other line is 4i. There are two lines, 1 and 2. Find angle between them.
The second line is 4i plus 2j minus 5k. लैम्डा की जगह म्यू ले लो. फाइंड एंगल बिटवीन देम. दोनों दो लाइन दे रखी है, एक कार्टेशियन इक्वेशन में, एक वेक्टर इक्वेशन में. दोनों के डी आर निकाल लो, फॉर्मूले में डाल दो. एंगल बिटवीन टू लाइंस. फाइंड डी आर्स. या तो वेक्टर फॉर्म में करना तो वेक्टर फॉर्म में कर लो, अदरवाइज वैसे कर लो. हो गया. पहले वाले के डी आर्स कितने आ रहे हैं? 4 - 2 1. सेकेंड के डी आर ये हुए 4 2 - 3. So cos theta, you can use this formula. A1 A2 16 minus 4 minus 3 divided by 16 plus 4 plus 1. बस करने से पहले हो गया. तो 9 डिवाइड बाय रूट 21. ये आ रहा है. अनुज, यस. रायन, शनाया. यस सर। Yes, sir. कुछ भी नहीं था इसमें, मैंने भी कर दिया. तो किसी का डिफरेंट आ रहा है? मीरा का डिफरेंट है. क्या आ रहा है? नहीं सर, सेम आंसर. सेम. चलो सही है मेरा फिर तो. और रायन क्या आ रहा है? यही है. हाँ जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. If two lines in 2D are not parallel, they'll be definitely intersecting. 2D में तो ये होता है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो they will definitely intersect. But 3D में ऐसा नहीं है. In 3D there could be two lines which are not parallel, not intersecting. So two lines which are not parallel but still not intersecting are called skew lines. So we'll find shortest distance between them. One is r equal to r1 m1 lambda. The second line is r is equal to r2 plus m2 mu. This is the second line. दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. दिस कुड बी एमसीक्यू आल्सो इन एंट्रेंस एंड दिल बी 5 मार्कर क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम. फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइंस. ड्रॉ कर लो. बता रहा हूँ, रिजल्ट डेराइव कर रहे हैं हम. वी आर डेराइविंग फॉर्मूला फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. आर इक्वल टू r1 प्लस m1 लैम्डा. हाँ तो आर तो सेम ही रहेगा ना. इट्स वेरिएबल पॉइंट, वी कांट चेंज दैट. वेरिएबल पॉइंट तो आर ही लोगे. So the shortest distance between the two lines will be perpendicular to both. Suppose it's like this. So when the two lines are like this, the shortest distance has to be perpendicular to both. Now m1 is a vector which is parallel to the first line. m2 is a vector which is parallel to the second line. Can you find a unit vector which is perpendicular to m1 and m2 both? Anyone? Which और vector? Which unit vector would be perpendicular to m1 and m2 both? Yes. A unit vector perpendicular to both lines will be this. m1 cross m2 by mod of m1 cross m2. ये किया था ना वेक्टर में.
Whenever you find cross product is always perpendicular. And if you divide by its modulus, it'll become the unit vector perpendicular to both the vectors. So M1 cross M2 by so this is basically n cap is parallel to D, right? Suppose this is point A, this is point B, this is, so you can find AB vector also. What is AB vector? AB vector would be R2 minus R1. है ना? A has position vector R2, B has position vector R1. So AB would be R1 minus R2. Doesn't make a difference. Now this is fine. Now if I take projection of AB on this n cap is a unit vector parallel to D. If I find projection of n cap on AB on n cap, and that will be the distance. So projection of AB on n cap would be AB dot n cap. So it will be R1 minus R2 dot M1 cross M2 divided by mod M1 cross M2. And since distance cannot be negative, you can write mod of the entire term. So this is the formula for distance between two lines which are skew lines, which are not parallel. Two lines which are not parallel. This is the formula. All you have to do is identify R1, R2, identify M1, M2, and then apply the formula. And what if the line intersect each other? Then D will be 0. In such a situation, the result would be R1 minus R2 would be X1 minus X2, Y1 minus Y2, Z1 minus Z2. M1 cross M2 would be A1, B1, C1, A2, B2, C2 equal to 0. So this determinant will be equal to 0 in case they are intersecting, but lines are not parallel. So this is a condition for intersecting lines. First row is X1 minus X2. Second row is Y1 minus Y2. Third row is Z1 minus Z2. First row. Then A1, B1, C1, A2, B2, C2, and so on. These are two lines given to you. Question is find distance between them. Find shortest distance between these two lines. कर लो आराम से. एक लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है, दूसरी वेक्टर फॉर्म में, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. दोनों को स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म में लिख लो. आइडेंटिफाई R1, R2, M1, M2. बिना गलती किए करना है सॉल्व.
दोनों लाइन को स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म में लिख लो, है ना? कहाँ है ऑलरेडी? है ऑलरेडी? Coefficient of xyz should be +1. मेरा फर्स्ट लाइन के डीआर्स क्या है? सर मैंने अभी निकाले नहीं। क्या तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से फिर? I don't know, sir. I don't like this chapter. I've never done this chapter. तो अभी सब लोग ही तो अभी कर रहे हैं, मैं भी अभी करा रहा हूँ। तो फिर कर क्या रही हो उतनी देर से तुम? सर ये R का बनाया है वो इक्वेशन ऑफ द लाइन, हाँ तो फिर उसका उसको सेपरेट कोएफिशिएंट, कर दिया है। तो कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं? जो लैम्डा के कोएफिशिएंट है वही तो m होता है। अच्छा तो देन वो 235। अरे क्या होगा तुम्हारा? इतनी देर से जो कराया जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, तुम्हें कुछ पता ही नहीं Sir, चल रहा it's क्या too हो रहा है? much information all at once. I'm trying to process this. हाँ वही करना है। हाँ हाँ। Like if the coefficient of x y z are +1, तो डिनोमिनेटर डी आर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे -z आ रहा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तुम्हें। x-1/2 y-y/3 एंड इसको -1 से डिवाइड करो तो z-3 डिवाइड बाय -5, ये हो गया। तो फर्स्ट लाइन के डी आर हो गए 2 3 -5। तो समझ में नहीं आ रहा तो पूछती क्यों नहीं हो तुम फिर? Sir, I thought मैं when you take a break, I will study this more. जो अरे आपने अरे क्या बात है। तो पिछली क्लास में नहीं थी क्या फिर? सर एंड पोर्शन नहीं देखा ना। अच्छा, वो दादी ने डिनर भी बुला लिया था। हाँ जी। राइट, इसको आप वेक्टर फॉर्म में चाहें तो वैसे लिख लो, अदरवाइज यू नो द पॉइंट क्या हो गया। पॉइंट पूरा लिख ही देता हूँ मैं। R = R1 कितना हो जाएगा? 1 I हो गया, 0 J हो जाएगा एंड 3K हो जाएगा, है ना? एंड दिस इज लैम्डा टाइम्स 2I + 3J - 5K। दिस इज फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड लाइन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। The second line in standard form, R would be I plus 2J plus 4K. Then T into -I plus 3J plus K, right? ये आ रहा है अनुज? The second line. Yes, sir. So now you know what is R1, what is R2. This is R1, this is R2. This is M1, this is M2. Now you find M1 cross M2 first. कौन सा -2I? हम्म, M2 is -2I। हाँ, नीचे वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो वही था फिर। 2I, दिस इज, ये चेंज करेंगे -2I है। So now you find M1 cross M2 because in the formula we need to find M1 cross M2 I J K. What is M1? 2 3 -5 and -2 3 1। Find M1 cross M2। हो गया? So M1 cross M2 is coming out to be 18I, 8J and 12K, right? Then you can also find its mod.
because we'll be needing this. 18 square, 8 square, 12 square. If you want, you can take 2 out, or else you can do directly also. If I take 2 out, it'll be 9 square, 4 square, 6 square. 81, 16, 36. कितना आ रहा है? 52 plus 18. 81. 133. Hmm? So this is M1 cross M2 ka mod, right? Now let's substitute this in the formula. You also find R1 minus R2. It won't make a difference whether you find R2 minus R1 or R minus R2 because there's a modulus sign. So R1 minus R2 will be, this is R1 and this is R2. So it will be 0I minus 2J minus K. And then this formula. So this is 0I minus 2J minus K dot M1 cross M2, which is 18I plus 8J plus 12K divided by 2 root 133. So the dot product, you know how to find dot product. It will be 0 minus 16 minus 12 divided by 2 root 133 whole modulus 28. 2 से divide कर दो 14 by root 133. So that's your answer. M1 T का coefficient denominator जो आ रहा है ना 2 3 minus 5 denominator -5 पहला वाला तो सेकंड लाइन है ना coefficient of T हाँ so that is a point 1 0 3 x minus x1 this is x1 y minus y1 y1 is 0 z minus 3 z1 is 3 x minus x1 y minus y1 z minus z1 इसको गो थ्रू कर लो एक बार ये तो अभी प्री बोर्ड में भी आया हुआ होगा प्री बोर्ड में नहीं आया ये Sir, it's not in my syllabus. ओ कौन सा तुम्हारा वो है फिर बोर्ड ICSE. उसमें 3D नहीं है नहीं सर, सेक्शन बी का कुछ नहीं है. We have section C, so we have like application of calculus, linear regression, whatever that is. अच्छा वो बेकार जो होता है easy वाला Exactly sir, easy वाले. हाँ तो ऐसा करो वेक्टर कर लो बिकॉज वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन आएंगे दे आर डुएबल क्वेश्चंस तभी मुझे पता नहीं था इतने गड्ढा हो उसमें वेक्टर 3D में इट्स दिस इज द रीजन ये तीनों क्वेश्चन आएंगे 4 भी आ सकते हैं मतलब यू कैन इमेजिन 20 मार्क्स कितना होता है तो वेक्टर 16 मार्क्स तो मतलब वेक्टर 3D कर लेना फॉर श्योर बिकॉज दिस क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली आंसर करेक्टली इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगा तो ये सभी का क्लियर हो गया अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पहली लाइन तो ये ले लेते हैं सेकेंड लाइन इज x plus 2 divided by 5 y minus p divided by 3 and z plus 1 divided by 1 4 ले लो इसको 3 ले लो these are the two lines question is that these lines are intersecting find the value p
These two lines are intersecting. Find the value of P. तुम्हारा कौन सा बोर्ड था? अच्छा, ये नहीं किया तुमने पहले कभी? शनाया तुम तो कर रही हो ना? तुम्हारा भी तो आईसीएससी बोर्ड है। हाँ, मैंने सेक्शन बी ले रखा है तो ये करना पड़ेगा। गुड। सेक्शन सी में क्या आ रहा है? लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा वो हाँ, क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन इकोनॉमिक्स, एक और चैप्टर ऐड होना। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न, वही सारी चीजें हैं। मार्जिनल कॉस्ट। सर, इसमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन है? नहीं, प्लेन हट चुका है ना, प्लेन इज नॉट इन सिलेबस। ओ, अब what do you have to do? The formula is there. Identify x1 x2, y1 y2, z1 z2, substitute. Identify abc, substitute, and determinant equal to 0. हाँ, तो if the lines are intersecting, this is the formula you have to use. तो पॉइंट क्या है फर्स्ट लाइन का? 1 0 -3। डी आर्स क्या है? 2 3 -5। सेकेंड लाइन का पॉइंट क्या है? -2 p -1। And what are the DRs of the second line? 5 -3 4. Substitute in the determinant, simplify, and that's your answer. Other DRs. A1, B1, C1, they are the DRs. X1, X2 are the points. So 1 -2, then 0 -p, and Z1 is -3, Z2 is -1. A1, B1, C1, 2 3 -5, 5 -3 4. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। पी की वैल्यू आ जाएगी। अभी का क्या आ रहा है पी? सर एक्चुअली मैंने 3 की जगह -1 ले लिया था। चलो दोबारा करो फिर। So this is 3 -p -2, 2 3। वन आ रहा है। देखते हैं। 12 -15 +p, 8 +25 -2 -6 -15 equals to 0. Hmm? 21 into 2, 42. 33p equals to -33. P is -1. देखो रायन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। -1 ना? So P is -1 if the lines are intersecting. This formula you can remember for intersecting lines.
Sometimes lines given to you are parallel. In that case, if you use this formula, it will not work because for parallel lines, M1 cross M2 will be always 0. If the lines are parallel, this formula will not work. So now the question is, how do we find distance between parallel lines? So the lines are parallel. One line would be R equal to R1, M lambda. Second line would be R equal to R2 plus M mu. So both the lines have M which are in proportion. That means lines are parallel. This formula will not work. So for parallel lines, formula for the distance is R1 minus R2 cross M divided by mod M, entire mod. So this is for parallel lines. Find the distance between these two lines, shortest distance between these two lines. Hmm. कोई सा भी ले सकता हूँ, सेम आंसर आएगा, बट इंश्योर दैट द सेम एम इज देयर इन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर. ये नहीं कि न्यूमरेटर में ये ले लिया, डिनोमिनेटर ये ले लिया, वो मत करना. बिकॉज दे आर पैरेलल. कैसे पता लगा? दे आर इन प्रोपोर्शन. If you look at these DRs, they are in proportion. This is 1, this is 2. This is 1, this is 2. This is 5, this is 10. So their DRs are in proportion. That means the lines are parallel. If you find M1 cross M2, answer 0 आएगा. Find R1 minus R2. It's cross product with M, and then आंसर बताओ क्या आ रहा है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा रैंडम है या स्पेसिफाइड है? क्या तो थोड़ा सा रैंडम आ रहा है. आने दो, रैंडम आ रहा है तो आने दो. रैंडम क्वेश्चन बना के रैंडम ही आंसर आएगा. क्या आ रहा है? √344/3√3. बरोबर है. करना बोर्ड पे.
मेरा हो गया। Sir, sort of, but I'm not sure at all. कोई बात नहीं, आंसर बताओ। Sir, नहीं। क्यों? सर मन नहीं है, फिर से करने दो एक बार। अरे आंसर तो बता दो फिर, सब आंसर तो पता लगे क्या है। नहीं सर, नहीं। तो आई आंसर तो बिना आंसर नहीं पता लगे तो कैसे होगा? सर ही सॉल्विंग इट ना, मैं चेक कर लूंगी फिर। अरे बताओ ना, हम आंसर कंफर्म कर लेंगे फिर हमारा। रैंडम सर आ रहा है। मेरा तो फिर 2√86/√27 आ रहा है, तो मुझे ठीक बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा। अब चेक करो, R2 - R1 कितना लिखा तुमने? सर सर इसका सेम है। हम्म। सर मेरा और मेरा सेम आ रहा है। ठीक है। हाँ तभी तो आएगा, बिना मॉड के आंसर कैसे आएगा? अब इसका मॉड निकाल सकते हो तुम, बहुत छोटा कर दिया। नीचे M का मॉड आएगा। M इज कौन सा M लिया है? सेम मॉड M, ऊपर वाला ठीक है। अभी का तुम्हारा कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा सर। मेरा ये आ रहा था। यस सर, यही है। तुम्हारा क्या आ रहा था लेकिन पहले? सर उसका मैंने 2 बाहर निकाल दिया था कॉमन ना, हाँ तो फिर फिर, थोड़ा चेंज हुआ, बट सेम थिंग ही है। हाँ ठीक है, सही है। तो 2 निकालना बेटर था, बिकॉज वो वैल्यू छोटी हो जाती है ना फिर मल्टीप्लिकेशन में। तो इफ यू कैन टेक सम नंबर आउट तो वो बेटर रहता है हमेशा। राइट, सो नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर 3D ओवर। अब पार्टी शुरू करते हैं, MCQs। देयर यूज्ड टू बी प्लेन अर्लियर सिलेबस में, उससे पहले स्फेयर भी था। अब धीरे धीरे सिलेबस कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि बच्चे बहुत बिजी हो गए लाइफ में, इनके पास टाइम नहीं है पढ़ाई का। सो रिड्यूस द सिलेबस। कभी फोन है, कभी इंस्टाग्राम है, कभी टेलीग्राम है, कभी फोनोग्राम है, कभी डिनर है, नहीं कभी पार्टी है। अभी गायब होने वाली है थोड़ी देर में, देखना है, बिना बताए क्लास से निकल जाती है। एक बार फॉर्मूले गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चन करते हैं।
इसको स्क्वायर कर दो, सारे पाप धुल जाएंगे। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2u.v प्लस 2v.w प्लस 2u.w इक्वल टू 0। 2 कॉमन, u.v plus v dot w plus u dot w will be minus of u square plus v square plus w square. This result, you can remember that the answer for this question will be always negative. And in the option, only one negative answer is there. This is a result which you can remember. U dot v plus v dot w, and this is always minus u square plus v square plus w square. So the answer for this question will be always negative. Only one negative option is there, that is the answer. कुछ नहीं करना है। ये आ रहा है, ये रिजल्ट याद कर लेना। But this result would be there only if u plus v plus w is 0. ये तो इजी क्वेश्चन है, कर दोगे। कोलिनियर पॉइंट मतलब दिलाए होने सेम लाइन। हम्म, करो। यू बीन गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। नहीं, डिटरमिनेंट क्यों करोगे? यू बेसिकली फाइंड द वेक्टर्स। क्वेश्चन को पहले समझो। The 3 points they lie on a straight line. That means if this is origin, position vector of point A, position vector of point B, and that of C has been given to you. So what you can do, you can find AB vector, you can find BC vector by subtracting. AB vector and BC vector are collinear, parallel, so their DRs would be the same proportion. You find AB vector, you find BC vector.
Okay, your answer is correct, Ryan. AB vector would be B minus A. 40i minus 8j minus 60i plus 3j. That is minus 20i minus 11j. Then you can find BC vector. BC vector would be 40, no, AI minus 52j minus 40i minus 8j. So this is A minus 40i, and this is 44j. Since AB and BC are parallel or collinear, that means their DRs would be in the same proportion. So A minus 40 by minus 20 is equal to minus 44 by minus 11. A equal to minus 40. तो जब भी vectors are collinear or parallel, their DRs lie in the same proportion. A1 by तुम तो पहले ही बोल देती हो सब कुछ. अगले का भी बता दो. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ अभी से.
You've been given A plus B mod. And it's a cross product. Cross product is not commutative. A cross B is not B cross A. A cross B is minus B cross है ना? क्या करोगे सोचो, दिमाग पे जोर डालो. Think loudly. This you can write as A cross 2I plus 3J plus 4K. You can interchange these two, no? So it'll become minus B cross 2I plus 3J plus 4K. Right? राइट साइड में मैंने A क्रॉस B को इंटरचेंज कर दिया, नेगेटिव साइन आ गया. अब उसको लेफ्ट में ले आओ. Bring this term on the left side. Bring this term to the left side. So A cross 2I plus 3J plus 4K plus B cross 2I plus 3J plus 4K equals to 0. Now you can answer it easily. Now can you write this as A plus B cross 2I plus 3J plus 4K equals to 0? Now what? A plus B cross something is equal to 0. When does it happen? वो पैरेलल Yes, when two vectors are parallel, their cross product is 0. When vectors are parallel, their cross product is 0. That means A plus B is parallel to this. That is, A plus B would be some scalar multiple of 2I plus 3J plus 4K. Whenever two vectors are parallel, one vector is scalar multiple of the other. अब क्या करना चाहिए? There you've been given mod of A plus B. So you can find mod of A plus B. Now you find mod. So mod A plus B would be mod of this, and mod of this would be root of 4 plus 9 plus 16. A plus B mod is root 29. So mod lambda mod root 29. So mod of lambda is 1. So lambda is plus minus 1. So when lambda is plus minus 1, you know what is A plus B vector is. A plus B vector would be plus minus 2I plus 3J plus 4K. So this is A plus B. So then you can find dot product. So A plus B is plus minus 2I plus 3J plus 4K. अब उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. कितना आ रहा है? 4 4 plus minus 4. So answer would be 4. So plus minus, this is 2I plus 3J plus 4K
डॉट -7i +2j +3k +-4. 4 is the answer. So simple concept of cross product and then dot product also. क्या मेरा कैसे किया? Sir, I took B plus C to the other side. फिर बिल्कुल स्क्वायर किया. छा गई तुम. गुड. यही करना था. बी और सी में एंगल निकालना है तो यू हैव टू टेक बी प्लस टी ऑन वन साइड एंड देन स्क्वायर बोथ द साइड्स कर लो. ठीक है. सो विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी equals to a square. So b dot c would be b magnitude c magnitude cos theta, the angle between them, and it is a square minus b square minus c square. Cos theta आ जाएगा. So cos theta is a square minus b square minus c square by 2bc. Value substitute कर दो. A is 7, 49 minus 25 minus 9 divided by 2bc. कितना आ रहा है ये? 40 minus 25 15 divided by, सही है ये? BC था. So वो 5 होगा. हाँ.
तो 15 इंटू 50 1/2 cos थीटा इज 1/2 दैट इज। तो वेक्टर तो प्रोसेस हो गया तुम्हारे दिमाग में। 3D पे कर लो, 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे फिर। तो जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला उनको एक साइड में रखना होता है इसमें। क्या कर सकते हो, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C। B क्रॉस C को लिख लो -C क्रॉस B। सो A क्रॉस B प्लस C क्रॉस B इक्वल्स टू 0। दैट इज A प्लस C क्रॉस B इज इक्वल टू 0। दैट इज A प्लस C इज लैम्डा टाइम्स B, है ना। और A प्लस C is parallel to B, we can say that। फिर नेक्स्ट पेयर लेके कर लेते हैं, उससे कुछ आएगा। सर इसका आंसर वैसे है क्या? इसका आंसर 0 आना चाहिए। सर मैंने एक मेथड लगाया जिससे 0 आ गया, बट आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट। क्या किया? सर मैंने वो A+B+C का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया विद हम्म इटसेल्फ एंड ठीक इक्वल है। टू 0। उससे कुछ आता है? नहीं, तुमने उसको 0 से इक्वेट क्यों किया? सर समथिंग का क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 0 नहीं होता? अच्छा, सेम वेक्टर का। हाँ जी। फिर फिर उसे फिर खोल दिया, लाइक एज अच्छा। एन A क्रॉस A हो जाएगा, A क्रॉस B। फिर हम्म उसको थोड़े को नेगेटिव्स कर दिया है, वो 3 हम्म ऑफ A क्रॉस B माइनस 3 ऑफ A क्रॉस B, उससे 0। आई डोंट नो इफ दैट वर्क्स तो। नहीं, हो तो सकता है, उससे भी हो सकता है। ये किया ना तुमने, दो
सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हाँ होता है, जी। इसको ओपन किया होगा, यस। ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, फिर ए क्रॉस बी आ रहा होगा, फिर ए क्रॉस सी आ रहा होगा, फिर बी क्रॉस ए आएगा, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, देन यू हैव बी क्रॉस सी, देन यू हैव सी क्रॉस ए, then you have C cross B, and then you have C cross C, which is 0. हाँ जी। So this is 0, this is 0, this is 0. फिर 3 तो इक्वल ही है ना, A क्रॉस B इज द सेम एज B क्रॉस C which is the same as C cross A. No, no, A cross B is minus B cross A. हाँ, तो वो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। 0 हो गया ना with the left या side. दैट्स व्हाट आई डिड। Left side 0 हो गया उससे. See, if I take A plus B plus C is equal to say X vector, and I cross multiply with A, you know, so I get A cross A cross B, and A cross C equal to A cross X. This is 0. Then it's been given that A cross B is C cross A. That is, this and this will cancel. A cross C would be minus C cross A. So this and this will cancel out. So that will give you A cross X is equal to 0. Right? Similarly, it will give you B cross X is equal to 0. And then C cross X also equal to 0. तीनों को ऐड कर दो, फिर वो 0 हो जाएगा. So to add these, it will be A plus B plus C. So that would be that, possibly, I mean, A plus B plus C is 0. So more questions next class of vector 3D. And after that, I'll start with probability. Okay. Now you're free to have dinner.